यार जब दोस्तों की प्लेसमेंट लगती है हाँ एंड जब दोस्तों की इंटर्नशिप लगती है, सो एक तो वो फोमो होता है. वो तो सो नेचुरल वो हाँ फोमो बैटल करना ऑन अ डेली बेसिस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. हाँ So don't, if you have that fire and if you really have that purpose inside you, हम्म don't let that FOMO kill that fire, because हम्म uh, one day you'll reach where you want to go, लेकिन you'll have to go through that हम्म steep curve. So, hello everyone, and welcome to the first episode of Founder Fundas, where we will be talking to founders, learning from the fundas, and growing ourselves. And for the first episode, we have with us Pranav Mehta, who is the co founder of Seller Setu, a Bits Pilani student and a great friend of mine. Seller Setu aims to help businesses go live on ONDC faster, better, and more efficient than ever. And if you are not familiar with what ONDC is, it stands for Open Network Digital Commerce, which is a Government of India initiative to help any buyer and any seller connect on one standardized platform without needing any major platforms like Amazon or Flipkart. So, yeah, let's talk to Pranav and let's learn from his fundas. Okay, so I'm an undergraduate currently at BITS Pilani campus, and I'm pursuing MSc Economics and PE in Electrical and Electronics. So मेरे को यार जब मैं कॉलेज में घुसा तब से हाँ मेरे को कुछ चालू करने का भूत चढ़ा था. So the first idea that came in my mind was a cloud kitchen in the Pilani campus. So ओके that is the I had a discussion with a friend of mine college के अंदर. So उस friend ने यार mention किया कि ये ONDC is really picking up. And then I went on Google. This is almost 1 year, 7 months back. ओके I searched about it and I got to know कि ONDC ने कुछ तो pilot चालू किया कुछ cities के अंदर, हाँ 2 or 3 cities. ओके And that's when I had a discussion with 2 of my roommates, or you can हाँ say one roommate and one वन pseudo सूडो wingmate. विंगी हाँ One Priyanshu and the other one was Agman. So हम्म हम राम रेडी पे बैठे थे, हम चाय पी रहे थे एंड पार्ले जी. So over that cup of chai we were actually discussing, and मैं बहुत हाइप अप करके उनको ये आइडिया बता रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि it would be very difficult for me to convince them. ओके हाँ But what surprised me was कि वो लोग पहली बार में कन्विंस हो गए, both of them, and they were so surprised by this idea. They were so happy that this came into their lives. कि we started ideating upon what to do from the next day onwards, and this is how Seller Setu was born, uh, हाँ हाँ from Ram Ready itself. Yeah. एंड मतलब सेलर सेतु अभी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है Okay. So basically, Seller Setu wants to be the biggest enabler of open networks. Why I'm saying open networks is because we don't want to limit to just ONDC. ओके So we want to become the biggest enablers of open networks like ONDC, and not just by selling the best technology out there, ओके but by selling sales and convenience. These are the two things that matter for the people. That is, उनको धंधा आना चाहिए and दूसरा हाँ easy चीज होनी चाहिए, तभी adoption बढ़ेगा. These are the two things. हाँ तो मतलब यू हेल्प बाय इंक्रीज अडॉप्शन मतलब कि तुम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हो टू सेल देयर स्टफ ऐसे एंड थ्रू ONDC. Okay. So basically, to put it in simple terms, we're building the Shopify for ONDC. Shopify for But it's not just Shopify for ONDC, it's bigger and better. okay Why? Because we have a lot of features which make it not just dependent on ONDC. As I said, seller को मतलब होना चाहिए सेल से एंड कन्वीनियंस से. पैसा कहीं से भी आ रहा हो, भले ONDC से ऑर्डर आ रहा हो या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आ रहा हो या Amazon या कोई भी ABCD प्लेटफॉर्म हो, उनको धंधा आना चाहिए. So we made this platform independent first of all, and second is we are making it so convenient where all our integrations and making our dashboard AI powered that everything can be automated inside the dashboard. So एक किराना स्टोर वाला, मॉम एंड पॉप स्टोर वाला भी उस डैशबोर्ड को ऑपरेट कर सकता है, एंड MNC कैन आल्सो ऑपरेट द डैशबोर्ड. So it's the same thing okay for both of them.
that's how we've made this dashboard, keeping in mind the grassroots level sellers. And these are the two pillars, like I say, sales and convenience. Sales And and if these two are there, then nothing can stop us from growing. Got it. मतलब मैं इससे इम्प्रेस हो गया काफ़ी, लाइक ये एक जो लाइन बोली कि ऑन द प्लेटफॉर्म यू कैन बेसिकली ऑटोमेट एवरीथिंग यूजिंग एआई, तो मतलब ये डज इज़ दैट द टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ ऑफ U3 इटसेल्फ, या मतलब तुम्हारी पूरी टीम इसके पीछे मतलब बिल्ड करती है टू इंश्योर कि सब लोगों के लिए फ्लेक्सिबल रहे ये? एंड ये टीम बिल्ड भी कैसे हुई, मतलब कि एक्चुअली वी आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स राइट, तो Yes. ये टीम बिल्ड कैसे हुई? So basically, how this started was कि टीम हमने पहले कुछ लोग लिए थे बिट्स से ही. So the first few people were from bits. So we had no idea हमें जो skill set required थी, हम उसके regarding search करते थे LinkedIn के ऊपर, and we just used to hire from LinkedIn. ओके. और via word of mouth कि यार इसको ये आता है, इसको ये आता है. तो हमने initially एक ऐप रखी थी जिसमें 4 लोग थे, and एक UI UX के लिए टीम रखी थी जिसमें 2 लोग थे. ओके. So initial designs हुई, initial development हुआ ऐप का, and that is how the team started. ओके. And post that the team has evolved. We have had a lot of people who've been in and out of the team, and I can say that now we finally have a team जिसमें बहुत अच्छी synergy है, बहुत अच्छी bonding है, and every day I feel like I want to interact with these people because मैं उनको push नहीं करता हूँ, वो भी मेरे को push करते हैं. So it's a symbiotic relationship, and that is how I like things to be. Let's go. ऐसा yeah. और कुछ ऐसा लगता है कि मतलब बिट्स के बारे में कुछ अच्छा हो या कुछ बुरा हो कि that is either stopping you or forcing you to move ahead, just to give the people more insights about what's the reality of building a startup in bits? Very controversial topic. Although maximum things that I have to say about bits is positive only. So bits का जो environment है, जो competition create करता है, जो kind of community है, जो policy है उसकी attendance, that is a big plus for any person who has the ambition of building something right from the college. Okay. Second is second thing that stands out is its alumni. Bits का alumni network is solid, and if you can tap into that, वही आपके पहले investors बनेंगे, वही आपके पहले supporters बनेंगे, वही आपके पहले mentors बनेंगे, and that relationship goes long way. Second thing is Paids. So Paids, how Paids helps is basically you need a holding hand when you just have that idea inside your mind. So most of the people that you talk to are kind of repulsive to that idea early on because उनको वो belief नहीं होता है. लेकिन as a incubator का काम होता है कि वो आपको right from the ideation stage support करे and आपको आपकी growth में help करे. And that job is done perfectly by Paids. And one thing that I like to add is students कई बार expect करते हैं कि यार हमें सामने से help मिलनी चाहिए, लेकिन सामने से help नहीं आएगी. आपको कुछ काम करवाना है, वो आपका incentive है, you need to follow up, otherwise वो ना आपको help करेंगे and आप फिर उनको बोलोगे कि यार help नहीं आ रही. That is always the other way around. You have to push things to get it done. True. Get them. में मतलब what's still the most challenging part of building Sela Setu? Okay. So two things. यार जब दोस्तों की प्लेसमेंट लगती है एंड जब दोस्तों की इंटर्नशिप्स लगती है, सो एक तो वो फोमो होता है. सो वो फोमो बैटल करना ऑन अ डेली बेसिस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. So don't, if you have that fire and if you really have that purpose inside you, don't let that FOMO kill that fire, because one day you'll reach where you want to go, लेकिन you'll have to go through that steep curve. So वो एक चीज है. बीच में कई बार टाइम आता है कि यार सुबह उठते लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, कुछ होगा नहीं होगा इससे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ करना था, तो जिस पर्पस के चलते वो याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क्स, I'd say. Second is the team.
So I'll hands down, this is the biggest challenge. Getting a good team can either make or break your venture. अगर टीम अच्छी है and you even have a low level product, you will work something out. You will get acquired. You will make a traditional business out of it, if not a very scalable business, but you will make a living out of that. True. And अगर टीम अच्छी नहीं है तो फिर बॉस आपका बेस्ट प्रोडक्ट हो, you take example of any venture that has failed because of the team, and product हमेशा उस चीज का अच्छा होगा. So team has to be really good, and that core team, that founding team. So I have one story. Zerodha के बारे में सुना होगा. Zerodha की जो tech team है, which is the backbone of Zerodha, जो कि इतने millions of transactions handle कर पाता है. टेक टीम में पिछले 10 से 11 साल में, if I'm not wrong, खाली एक बंदा चर्न हुआ है टीम में से. The rest 99 people have been there from the start. And in the next 2-3 years, I believe they're already millionaires, everyone. So if you pass that curve, then you are beyond that point where you've gone ahead of a lot of people. लेकिन वो जो curve pass करने वाला phase होता है, you have to handle yourself in that phase. That's the most difficult part. So like, if team building is such an important part, so you suppose as a co-founder, what's that one particular skill, मतलब when you look while including someone in your team, कि ये अगर आएगा तो it will only raise the bar for our team. Okay, so यार इसमें भी मैं बोलूँगा कि दो तरीके होते हैं. So अगर आपके पास कुछ ऐसा आइडिया जो कि way ahead of its time है, then तो there's this one skill जो कि I always look for, और in fact Priyanshu mainly does this job of hiring. So मैंने भी जितने इंटरव्यूज अटेंड किए हैं, दिस वन थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लुक फॉर इज इनिशिएटिव. ओके. इफ यू नॉट टेकिंग इनिशिएटिव्स, सो काम खत्म हो गया भैया, क्या काम करना है भैया, अब क्या करना है. सो इफ आई हैव टू टेल यू कि यार तेरा काम खत्म हुआ है कि नहीं, अब ये नया काम ले, then that's not how a startup works, that's how a MNC works. इतने सारे मैसेजेस टू आवर ऑडियंस के बाद, मतलब is there anything which you want that they, if there is one thing that they take away from this video is, तो वो ये होगी. Okay, so एक चीज जो कि मैं काफी रिपीट करता हूँ, मैं कभी किसी की तारीफ नहीं करता हूँ जनरली. ठीक है, बहुत रेयरली मैं किसी की तारीफ करता हूँ. Although I know कि you should criticize in private and praise in public. That I do, but very rarely. Mostly I only point out mistakes. उनको प्राइवेट में लेकिन ये जाके बोलता हूँ कि अगर मैं तुमको अभी बोलने लग गया कि तुम सही कर रहे हो, and if you get joyful about that, अगर आप अपने आप के ऊपर खुश हो जाते हो कि यार we did a great job, you will never feel that there's a scope for improvement in the product. And you can never be perfect. So I always tell कि अगर आपके नीचे भी कोई हो, you are working with someone, if you are supervising something, से कि ये perfect है, से कि यार इसमें ये गलती है, इसको improve करते हैं, इसमें गलती है, only then will you be able to make that product perfect. That is something that I always say, and I always ask people not to be discouraged या फिर demotivate हो जाए कि यार ये क्या बोल दिया, इतना अच्छा काम किया, लेकिन there are hundreds of people doing that same thing. If you want to be ahead of them, then you need to think that this is not perfect. Only then you will keep improving at such a rate, and you will reach such a level कि यार तब तुम जाके बोल सकते हो कि हाँ, this is good enough. So that not good enough वाला जो culture है, this is something that we follow in the team. This is not good enough. We'll have to. This is one thing. So उसमें यार लोगों को demotivate या discourage नहीं होना चाहिए. You should always think, वो कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी upskilling भी कर रहे हो, you should always think यार अब तक ठीक है, कर लिया, लेकिन there's much more left. तब जाके वो एक ऐसे लेवल पे पहुंचेंगे जब लोग उनको देख के admire करेंगे यार this is where I want to be. So this is one thing that we follow from early on, and this is going to be there in the team. Yes. Man, Mita, one more thing added to my book.
ये एक्चुअली भाई मतलब ये गुड टेक अवे अगेन। हाँ, एंड वही भाई मतलब मेरा भी यही पर्पस था वीडियो से कि मतलब वी कैन हाईलाइट द स्टार्टअप कल्चर, बट आई थिंक उससे ज़्यादा देर हैव बीन मच मैनी मोर लेसन्स अपार्ट फ्रॉम अ स्टार्टअप, रनिंग अ स्टार्टअप, एंड दैट्स इट भाई। मतलब दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई फील कि वी हैड अ वैल्यू पैक्ड सेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक है, भाई इसमें थैंक यू क्या, हाँ I just had to take out 15 minutes of my time. All the effort was हाँ yours. चलो, तो बस थैंक्स अ लॉट मेहता। ठीक है, Thank एंड you. विशिंग द बेस्ट टू सेलर सेतु, और वही इतने सारे जो एडवेंचरस प्लान्स हैं उस सब के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, Thanks a lot. All चलो the best to you as well.